Hi everyone, welcome back to Think Money channel. Today's episode is going to be about how do we master our money mindset. So on this channel, we talk about investment, personal finance, and everything revolving around money. I think we have covered a lot of basics around fundamentals, technicals when it comes to investing and trading. But I think when it comes to psychology, it is equally important. तो हमने अभी तक जितने भी चीजों पर डिस्कशन किया है, जितनी भी चीजें कवर करी है हमारे चैनल पर, आई थिंक ये थोड़ा सा हटके वीडियो है. ये वीडियो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर है. ये वीडियो हमारी मनी को लेके जो माइंडसेट होनी चाहिए उसके ऊपर है. So I think this video is going to be about my own personal learnings that I have had by spending time in the market. मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस किया है over the last 8 to 9 years, उसका एक्सपीरियंस का समरी एंड ऑल्सो लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस फैबुलस बुक कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी. आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ये बुक. So I think we'll talk more about what this book teaches, and what are the core concepts about building a very positive and a strong money mindset. So let's start without wasting any time. Let's get into it. So yeah, welcome back to Think Money channel and our next video on mastering our money mindset. Just All right. So in this video, we will cover everything around psychology related to money when it comes to investment and trading. जितने भी concepts हमने सीखे हैं, this is going to be a very different video. Most of the concept in this video are borrowed from the book called Psychology of Money. अगर आपने ये book पढ़ी है, तो well and good, you would be knowing what kind of this book has an impact on all of us. जिन्होंने नहीं पढ़ी, I would certainly recommend do go and buy this book or check out this book. And it is one of the most favorite, most popular, and most loved books written about money in the entire history of mankind. So, just a summary of this book. We will touch upon 5 different concepts. 5 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में quickly. The first part is going to be talking about why behavior is more important than knowledge. We all chase knowledge कि सीखते हैं. We want to gain more concepts. We want to gain more technical expertise, but when it comes to psychological aspect of controlling your investments or controlling your portfolio or managing your own money, it is equally important that you learn how your behavior, how your relationship with how your behavior impacts your relationship with money. Second, we will talk about one of the most talked about concept in investments and trading, and when it comes to money, which is the concept of time, which is essentially described in the book by the power of compounding and the power of patience. In the third part, we will talk about whenever it comes to money, there is an inherent risk to it. जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, एवरी चॉइस, एवरी डिसीजन हैज एन इनहेरेंट रिस्क. उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, व्हाट शुड बी योर साइकोलॉजी व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग दैट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे. द फोर्थ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट द बुक टॉट मी इज we should not rule out the role of luck and humility. So कई बार हम बोलते हैं कि lot of decisions, lot of impact, and the outcomes that we are achieving is because of our hard work, our smart work, or the talent and the expertise that we have built. But we factor out luck quite often. So we'll see how luck and humility plays a very important role in building the right psychology around money. And last but not the least, we will summarize the video by talking about what is freedom versus money. So, while we keep chasing money throughout our lives by earning more, by gaining more experience, by getting the next promotion, or getting the next hike, or making the next big multi-bagger in our portfolio, at the end, what is that money is going to get you on your plate. So we'll talk about what is freedom from a money point of view. So let's jump into it. I think the first concept is about controlling your behavior. So I think it's more of a concept where the book talks about having an emotional quotient rather than just the intelligence quotient. So EQ is very important than IQ. And I think a lot of us, when we start getting skills, जब हम बहुत सारी चीजें नई नई सीखते हैं, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखा, चार्ट पे ड्राइंग सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी. When we start learning those skills and when we start applying those skills, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है. We start believing that our knowledge will
make us successful. But कई बार ऐसा होता नहीं है. So when you play around with your money in terms of your investments, when you're controlling your money with your own hands, you will experience a lot of emotions in your entire investment journey. In the past 8 years, मैंने अपने खुद के लास्ट 8 से 9 सालों में all of these emotions that are there on your screen, fear, greed, anxiety, desperation, euphoria, and hope, I've experienced each and every of these emotions multiple number of times. So it is very important to understand कि कौन से सिनेरियो में आपको कौन सी फीलिंग, कौन सी इमोशन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, and why that happens. It happens because your money is a very very crucial part of your life. The money that you're touching with your own hands, you're deploying it with your own hands, आप अपने हाथों से इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं गलत ना हो जाऊं. और कई बार आपको जब उस पर रिटर्न्स आता है तो आप काफी खुश हो जाते हैं. You know, go into an euphoria and you start believing that you are the king. But the right kind of the investor mindset or the right mindset around managing your money is to find the real balance between all these spectrum of emotions. ये जितने भी emotions है, आपको कब कौन सा emotion कितने extent तक absorb करना है और कब उसको overcome करके you have to start feeling normal. It's very very important. So yes, managing emotions will become the bedrock of your success in your investing career or your investing journey. And hence, for all these emotions, whenever you feel an emotion, you have to learn from the why of that emotion. आपको ये समझना होगा कि fear हुआ तो क्यों हुआ, greed आई तो क्यों आई, anxiety हुई तो क्यों हुई. You have to start asking yourself why, कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों feel कर रहा हूँ. Once you start feeling those whys, once you start discussing those whys with your trusted partners who are there in your investment journey, maybe आपके spouse होंगे, maybe आपके friends होंगे, आपके family members होंगे, you have to discuss those emotions. You have to get out of that emotion bubble, and that's when you will start learning from those mistakes and those emotions, and you will overcome it. Next, I think the book also, beautifully talks about the power of compounding. I think it needs no mention. We all know what compounding is, and you know what compounding really achieves in everyone's life. So I think compounding is a very very fundamental concept. आप relationship को ले लें, not just money, relationship, health, fitness, your learning, everything compounds in life, and that is why Einstein rightfully quoted that compounding is the eighth wonder of the world. आई थिंक वी ऑल रियलाइज कि हम जब सुनते हैं कंपाउंडिंग के बारे में हमें लगता है कि हाँ यार ये काफी सही चीज है, ये होती होगी. बट द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग इट, द रियल टेस्ट ऑफ कंपाउंडिंग ओनली कम्स व्हेन यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ पेशेंस इन योर लाइफ. आपको अपने कंपाउंडिंग, अपने पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग को ले लो, या अपने फिटनेस की कंपाउंडिंग को ले लो, हेल्थ की कंपाउंडिंग को ले लो, एवरीथिंग कम्स विथ इट्स ओन स्वीट टाइम. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस. You have to keep very very high degree of patience. You have to be equally patient when it comes to managing your money, compared to everything else in life wherever compounding works. So वॉरेन बफे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट किया था in one of the AGMs of Berkshire Hathaway, that market is a playground where the money gets transferred from the impatient people to the patient people. तो अगर आपके अंदर patience नहीं है, then you will someday or the other you will eventually lose money. So I think for compounding, there is also a very interesting concept associated to compounding called snowball effect. So snowball effect is basically talking about, आपने बर्फ का एक पहाड़ देखा होगा. So whenever there is an avalanche, जब बर्फ गिरता है, so there is a small ball of ice which starts rolling down the hill, और वो अपने साथ बहुत सारा ice जोड़ते चला जाता है, and the size of the ball grows, and that is what we call as snowball effect. I think in investment it is very very true, and people who have invested, who have been patient with their investments for 10 years, 20 years, 30 years, considering our age, our audience age or my age, we haven't had that kind of an experience yet. जैसे मेरा अभी 8 से 9 साल का experience हुआ है. The moment I cross a threshold of, let's say, 10, 12 years, we will realize and we'll start seeing this snowball effect very very apparently in our portfolios. So I think it's the key here is to be very very patient. Two important things that comes with compounding is, number one, there is a rule of 72. It's a very generic thumb rule. It's not a very scientific. It's technically derived from mathematics, so yes, it is scientific. The rule of 72 is a thumb rule where it talks about कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर X% कंपाउंडेड रेट से ग्रो हो रहा है, the XIRR or the CAGR of your
preferred mode of investment or your decision, the decision that you have made for putting your money, if it is growing at X percentage, the amount of money it takes to actually double your corpus is 72 by X. तो अगर आपका 12% से just like Nifty अगर grow करा, it will take 6 years for that X amount for that invested amount to become double. अगर आपने 100 रुपए डाले हैं, 12% से ग्रो कर रहा है, तो उसको 100 को 200 बनने में 6 साल लगेंगे. Similarly, if it is 24%, it will become double in 3 years. The other interesting concept is that almost everyone experiences this, and it's very, very true that your wealth will explode after a certain threshold. In general, Indian market के currency and threshold के हिसाब से people talk very, very widely popular threshold as 1 crore. So 1 crore is that magic number in Indian market, and similarly, the first 100K or 1 million, you can say, is the magic number globally. So if you're crossing that threshold, the first crore is the most difficult to achieve. अगर आपने अपने portfolio में that first crore, if you're achieving आपने अपने portfolio का पहला करोड़ achieve कर लिया है through accumulating principal, gaining more experience, getting those hikes, investing more principal into your investment portfolio. The moment you touch 1 CR, it will take its own sweet time. आपके first year of job में नहीं होगा. Maybe some of us might do it. People who are into very well paid, high paying jobs might experience it. Someone who will be having their inherited wealth from family would also have it. But for those people who are starting from scratch, like I started from scratch, creating your first CR is going to be very, very, very difficult. उसमें time लगेगा, उसमें बहुत सारा patience लगेगा. But the moment you hit 1 CR, the velocity from there to hit every another CR is going to get decreasing, decreasing, and decreasing. That is what also is reflected in the infographic chart जो मैंने यहाँ पे डाला है. The velocity of every next milestone, every next crore keeps getting faster. So you'll achieve 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ करने में जितना टाइम लगेगा, 1 से 2 में उससे कम टाइम लगेगा, 2 से 3 में उससे कम टाइम लगेगा, and all that. So that is why it's called wealth explosion after a threshold, right? Next, I think it is one of the most important part of my own journey that I've learned over a period of time by doing a lot of mistakes. बहुत सारी गलतियों के बाद लोग ये चीज सीखते हैं, and I think it is very important to talk about this particular concept when we are making a video on money mindset. So risk is something which is very, very true to any kind of investment. आप कोई सा भी investment करते हैं, except FD. FD is one of the most safe, considered to be one of the most safest choice of investment. Everything else comes with an inherent risk. Even in case of FDs, there is always a risk that the bank can go bust, the bank can go downhill, bank बंद हो गया, तो आपकी deposit anyways is somehow recoverable, but there is a risk that your money will get blocked. So every single investment choice that we make has an inherent risk. अब इस रिस्क को आप कैसे समझते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे मिटिगेट करते हैं, दोज आर द 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट को अचीव करने के पहले आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क होता क्या है. रिस्क इज ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लूजिंग मनी. जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब तक आप ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और अपने गलतियों से सीखेंगे नहीं, आई थिंक यू विल ऑलवेज live in a bliss कि यार ठीक है, there is no risk, there is no downside. And that is why people choose to invest in more and more risky asset classes such as crypto, P2P investment, and all that. So it is very important to understand what is the risk associated to your investment product, and then how do we mitigate that risk. So I think mitigation of risk broadly falls into these 3 buckets that we have mentioned. One is diversification. We all talk about don't keep all your eggs in one single basket, which means अगर आपको diversify करना है, अगर आपको अपने पैसे को distribute करना है, spread करना है across multiple products, multiple rate of returns, you should try to diversify with your style of investment, and within those adopted styles, जो भी आपने style of investment choose किया, ठीक है, आप बहुत ही safe खेलते हैं, so you are an index fund investor and a debt fund investor or an FD investor. Within that particular product, within that particular style, try to diversify within your options. अगर आपने FD करा है, तो try to diversify with different rate of returns, different tenure, different banks, and so on. Similarly, अगर आपने सिर्फ index fund किया है, तो try to diversify with multiple fund houses, try to play around with different indices in the market, and see that diversification will eventually help you demerge the risk.
आपका कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट होगा, एक स्प्रेड बनेगा, एंड दैट्स वेयर द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी विल हेल्प यू। द सेकंड इज एसेट एलोकेशन। सारी चीजें एक एसेट में ना इन्वेस्ट करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफडी करते हैं, इट इज वेरी वेरी आई वुड से रॉन्ग मूव। अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड करते हैं, अगेन इट इज अ वेरी रॉन्ग मूव। सो हैविंग द राइट एसेट एलोकेशन की कौन से प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। एंड दिस इज वेयर यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेज। हेज इज बेसिकली, मेरे पोर्टफोलियो में आज अगर 100 रुपए है, कल मार्केट में कुछ भी हुआ, 100 का अगर 80 हो जाता है, तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो उसको 100 to 80 ना जाने दें और 100 to 90 पर कंट्रोल कर लें? दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेज कम्स इन, एंड दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बेट्स स्प्रेड करके रखने चाहिए, और कुछ बेट्स ऐसे भी होने चाहिए, कुछ एसेट्स ऐसे भी होने चाहिए जो आपके हायर रिस्क की बकेट्स या हायर रिस्क की एसेट्स को हेज करके, यानी बचाकर चलें, उसको सेफ गार्ड करके रखें और डाउन रिस्क कंट्रोल करें। And third and most important concept here is position sizing. So we all talk about, asking when to buy, what to buy. कब खरीदें, क्या खरीदें is the important question. But you also need to understand कितना खरीदें is also very important to generate substantial return. अगर आपको पता है कि निफ्टी 12% का रिटर्न देगा, 12% का रिटर्न देगा, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करें, आपको पता है 1 साल के बाद 112 हो जाएगा। आपको आपके 1000 रुपए का 100 रुपए उसमें रखना है या नहीं रखना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से एसेट में कितना पोजीशन होना चाहिए एट द टाइम व्हेन यू आर टेकिंग अ बेट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इज गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन दैट यू आर टेकिंग। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज becoming essentially becomes position sizing. It's more कॉमन टर्म फॉर ट्रेडर्स व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक ट्रेड लिया तो इतना कैपिटल लगा, दूसरा ट्रेड लिया तो इतना कैपिटल लगा, एंड वी टॉक अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। I think last concept is around luck and humility. We often discount luck in our success. We talk about success being the outcome of our hard work and our skills that we acquire. But I think that additional factor of success, which we always, look down upon, is luck. So if you, in my definition, success is equal to hard work plus skill plus luck. अगर आपके पास वो आपने वो 5% luck unlock कर लिया, the alpha that you will generate in your quantum of success will be unbeatable. तो वो अल्फा जनरेटिंग लक आएगा कैसे? लक इज नॉट अ फैक्टर ऑफ चांस। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, आपने रैंडम 10 15 20 डिसीजन लिए, उसमें से एक लकी डिसीजन हो गया जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। आई थिंक लक इज मोर अबाउट हाउ डू यू प्रिपेयर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर मैनेजिंग योर मनी, एंड व्हेन इट लैंड्स द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, it will translate into luck. So luck is not about chance. Luck is about, combining preparation along with grabbing an opportunity at the right time. I think the second word is called humility. Humility here is how humble we are when it comes to, making a sense of the returns that we are making in our investment portfolio or the returns that our money is generating. कई बार ऐसा होता है हमारे रिटर्न्स को देखकर, हमारे राइट आउटकम्स या रॉन्ग आउटकम्स को देखकर कई बार हमारे पास बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं हमारे माइंड में। आई क्विकली टच अपॉन 3 different टाइप्स ऑफ बायस दैट द बुक टॉक्स अबाउट। द फर्स्ट वन इज हाइंडसाइट बायस। आप हाइंडसाइट बायस, आपने पास में कुछ सक्सेस अचीव किया होगा, आपको लगता है कि ये सेम डिसीजन आप दोबारा लोगे, फ्यूचर में भी सक्सेस आ जाएगा। इट इज अ बायस, इट इज नॉट, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, इट्स जस्ट दैट हाइंडसाइट बायस। सर्वाइवरशिप बायस, आपने कई बार बहुत सारी चीजें सीख ली, आपको लगता है आप छोटे छोटे मोटे शॉर्टकट्स ले लोगे एंड यू विल मेक quick money. So small time quick money, getting rich, these kind of schemes fall under this category, survivorship bias. आपने एक बार सक्सेस अचीव कर लिया डजंट मीन आप हर बार वो सक्सेस अचीव करोगे। दैट इज व्हाई दिस इज अनदर टाइप ऑफ बायस। एंड द थर्ड बायस इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। इट कम्स विद इंट्रोस्पेक्शन, कि सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप सक्सेस अचीव करते हो, आप सारा का सारा क्रेडिट खुद को देते हो। जब सक्सेस अचीव नहीं होती है तो आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढोगे, किसी ना किसी पर्सन को ढूंढोगे और आप ब्लेम करोगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज बायसेस, कि आपको कब ये बायस आ रहा है और आप कब इससे दूर हटके आप यू जूम आउट एंड you look differently on your investment decisions and your money. And the rightmost chart talks about, you start appreciating luck more when you achieve more humility. So yes, balance of humility and luck is very very important for your money mindset. Last but not the least, I think the book always talks about, and at the end it teaches us that the money is not going to buy
happiness for you or buy everything that you want. It's more about achieving the freedom to do anything that you want in your life. So I think all of that culminates to a movement called FIRE movement, which is financially independent and retire early movement. It has become very very popular. इस पे भी हम एक separate video बनाएंगे. But ultimately, why we are managing our money by learning fundamentals, technicals, the psychology around money is to actually, achieve true freedom and achieve that ability to control our time. So we'll touch upon this concept of fire in our subsequent video. We'll talk about how many types of fire exist. फायर का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, आज के डेट में लोग फायर अचीव करे तो कैसे अचीव करे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, एंड उनके लिए उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरा पर्सनल फायर नंबर क्या है, हाउ आई एम प्लानिंग टू अचीव माई fire goal. We will talk that in our next upcoming video. Till then, see you soon. Thanks for watching our video. Do share and like this video, and definitely drop your comments. Let us know how was it. Thank you so much.